आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश माई इंडिया माई लाइफ गोल्स और मैं हूं श्रुति शर्मा। माई इंडिया माई लाइफ गोल्स एक ऐसा अभियान जो TV9 नेटवर्क, कला और संस्कृति मंत्रालय यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल है, इसको आगे बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य है हमारे पर्यावरण को बचाने की पहल, जो एक मजबूत कड़ी बने, जिससे कि लोगों के प्रति जागरूकता बढ़े और लोग पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करें और इस प्रयास से जुड़ें। Also, for everyone's information, this is one of the 11 fundamental duties enshrined in the Constitution. India's leadership is setting the global green agenda और इसे आगे बढ़ाने के लिए ही आज हम सभी यहाँ जुड़े हैं। और एम यही है, one, renewing a pledge to protect and preserve natural environment and follow life goals. और आज का टॉपिक मेकिंग लाइफ गोल्स मैंडेटरी इन स्कूल्स। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं और उनका मैं इंट्रोडक्शन फिलहाल आपके साथ करा देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हैं मिस विनीशा उमाशंकर, जो कि चीफ इनोवेशन ऑफिसर हैं सोलर आयनिंग काट की, और साथ ही हमारे साथ हैं राजेश शुक्ला, जो कि गंगा सेवक हैं। और आपको बता दें कि ये वन ऑफ द ग्रीन वॉरियर्स रहे हैं हमारे साथ, स्पेशली एनवायरमेंटलिस्ट हैं और गंगा विचार मंच स्टेट को कॉन्वेनर हैं वाराणसी में। और साथ ही आपको बताएं हमारे साथ मिसेस के.ई. जेरिमा, प्रिंसिपल हैं ऑल सेंट्स कॉलेज नैनीताल की, और साथ ही जुड़ी हैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता, जो कि डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल के.आर. मंगलम वर्ल्ड स्कूल GK दिल्ली की हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि आप जानते ही हैं, आज का हमारा टॉपिक जो है खास है, और ख़ास इसलिए क्योंकि एक पहल हम सभी यहाँ कर रहे हैं ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें, और उसके साथ जो भी लाखों लोग हमें देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनको हम इस मुहिम के साथ जोड़ सकें। द टॉपिक, लाइक यू ऑल वुड नो, इज़ मेकिंग लाइफ गोल्स मैंडेटरी इन स्कूल। तो सबसे पहले एक ओपन क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ करूँगी। वो पहला यही सवाल कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे रही हूँ, जो कि रियल सिचुएशन भी होगी एट टाइम्स, आप सभी ने इनकाउंटर किया हो सकता है, कि एक बच्चा एक गाड़ी में जा रहा है, उसके साथ उसके पिताजी हैं जो कि गाड़ी चला रहे हैं, और पीछे वाली सीट में उनकी दादी बैठी हैं। तो आप देख सकते हैं 3 जनरेशन। बच्चा टॉफ़ी खाता है और रैपर जो है खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब मैं आपसे इसमें जानना चाहूँगी कि इस पूरी सिचुएशन में आप किसकी गलती मानेंगे? सबसे पहले दादी की, फिर उनके पिताजी की, और फिर बच्चे की, और कहीं ना कहीं इसमें स्कूल भी रिस्पॉन्सिबल है, कम्युनिटी भी रिस्पॉन्सिबल है। कम्युनिटी में अगर पहले से शुरू से बच्चे को सिखाया जाए स्कूल में और कम्युनिटी में, पुट इट वेयर इट बिलोंग्स टू, तो बच्चा हमेशा से उसको याद रखता है। बट अगर लिटर करने की आज्ञा कम्युनिटी ने और स्कूल ने बच्चों को कहीं भी सड़क पे दी है, तो बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा। और कहीं ना कहीं उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को यही करते हुए देखा है कि अपनी गाड़ी तो साफ रख लो, अपना घर तो साफ रख लो, कूड़ा जो है वो बाहर फेंक दो, चाहे वो बाहर घर का बाहर है या वो अपने कमरे का बाहर है या गाड़ी का बाहर है, वो उससे उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बच्चे की जो अपनी पर्सनल स्पेस है, वो उसका सिर्फ अपना दायरा है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है। वो देश को अपना नहीं समझता, वो शहर को अपना नहीं समझता। वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो आनी चाहिए बच्चों में, शहर के प्रति, देश के प्रति, अपनी सिटी के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपनी चीजों के प्रति, वो आती नहीं है। जब तक कि हम इसको स्कूल करिकुलम में एम्बेड नहीं करेंगे, जब तक सिटीजनशिप आप उसका पार्ट नहीं पढ़ाएंगे, मैं पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिटीजनशिप की बात कर रही हूँ, जब तक उसका पार्ट हम बच्चों को स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाएंगे और बच्चे और पेरेंट्स इन सिंक नहीं होंगे, तब तक ये सब होता रहेगा। मेरे साथ राजेश शुक्ला जी हैं। राजेश जी, बहुत बहुत बधाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक तरह से बहुत बड़ी बात कि आपसे हम बात कर पा रहे हैं। आप हमारे ग्रीन वॉरियर रह चुके हैं, और मेरा सौभाग्य है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो मेरे पास ही आई थी और हमने ही उसको सभी को दिखाया। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि
आपने ये काम जो है कब से शुरू किया, जो क्योंकि एक तरह से काशी की आत्मा को आप एक तरह से निर्मल कर रहे हैं, तो ये कितने पहले ये पहल शुरू हुई और कब आपको लगा कि अब ये काम मुझे करना चाहिए? जैसे कि डॉक्टर ज्योति ने बताया कि ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने दी थी, ये एकदम बचपन से शुरू करी जानी चाहिए थी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो इम्बाइब करी जाती हैं, सिर्फ स्कूल में नहीं, घर से ही। तो ये आपको कब एहसास हुआ कि हाँ, पर्यावरण को आपकी ज़रूरत है और कुछ काम करना चाहिए मुझे? बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सभी को हमारा नमस्कार। सांस्कृतिक राजधानी काशी से हम आप सभी को नमस्कार करते हैं। और यह विचार हमारे मन में करीब 15 वर्ष पूर्व ही आया, और इस विचार की परिणति जब आगे बढ़ी सन 2014 में, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सन्मुख 80 घाट पर वाराणसी में स्वयं अपने हाथों से फावड़ा चलाया, वहां पड़ी गंदगियों को बटोर करके कूड़ेदान तक पहुंचाया। इस कार्य को मैं देख रहा था, और चूंकि मेरा घर मां गंगा के निकट ही है, और सभी को मालूम है कि गंगा मैया, मां गंगा हमारे कितने काम आती हैं। हमारे सारे धार्मिक संस्कार हम मां गंगा के बिना पूरा ही नहीं कर पाते। तो हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम मां गंगा के किनारे सफाई का बीड़ा उठाएं। जब हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रेरणा स्रोत बन के हमारे आगे आए, और ये आंदोलन कि आज बच्चा बच्चा भी, जैसा आपने बताया कि यदि कोई टॉफी का अगर रैपर भी अगर वो फेंक रहा है, तो उसके मन में भी जरूर एक विचार आ रहा है कि हमें गंदगी नहीं करनी है। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं। और उनके मार्गदर्शन में जब मैंने सन 2014 में मैंने एक अभियान शुरू किया था, एक घाट चलो चले मोदी के साथ। इस अभियान के क्रम में वाराणसी के किसी भी घाट पर रोजाना मैं जाता था, और वहां जो गंदगियां हैं उसको अपने हाथों से और टीम के साथ सफाई करना, लोगों को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से गंदगी न करने का आग्रह करना, गंगा की तलहटी की सफाई करना, मां गंगा की आरती करना, ये सब चीजें प्रत्येक घाट पर जाकर जब हमने शुरू की, तो लगा कि निश्चित रूप से यह जो कार्य है एक बड़ा ही अनूठा है और एक अविस्मरणीय कार्य कहा जाएगा, यदि हम इस कार्य को एक अच्छे तरह से हम कर पाते हैं। क्योंकि पर्यावरण को संरक्षित करना, और वह भी अपनी मां गंगा को साफ सुथरा रखना पूरे भारतवर्ष का दायित्व है। और इसी दायित्व को स्वयं बोध करते हुए जब हमने इस ओर प्रयास किया, तो एक टीम इकट्ठी हुई, और लोग घाटों घाटों पर लोग जुड़ते चले गए, और लोगों ने स्वयं भी आगे आए, लोग जागरूक हुए कि नहीं, अब गंगा किनारे कोई गंदगी ना हो। और यह प्रयास जब आगे बढ़ा, तो इन 5 राज्यों में भी बढ़ता चला गया। जहां जहां गंगा का किनारा है, जहां गंगा 2525 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी करती हैं, उन राज्यों में भी लोग जागरूक होते चले गए। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक जन आंदोलन खड़ा किया है इस स्वच्छता का, वह हम सभी को आरोग्य भारत की ओर तो बढ़ाता ही है, हमारे पर्यावरण को भी बचाने का कार्य कर रहा है। बिल्कुल। राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत जारी रहेगी। मैं जानना चाहूँगी मिसेस के.ई. जमिया, जो कि प्रिंसिपल है ऑल सेंट्स कॉलेज नैनीताल की। मैम, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट यू नो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन, ऑफ कीपिंग environment safe is of course our responsibility, and our responsibility is also that we should imbibe the same hygiene culture in our kids also. But having said that, how do we do that? How do we integrate that thing in terms of education when we come to kids who are studying in school? How do we get that awareness? Thank you very much. And thank you for inviting me to this platform. First, I would like to respond to your opening question. अक्सर दादी नानी को हमारे यहाँ
इतना मौका नहीं मिलता है कि वो बच्चों को चेक कर पाए. It's parents who come first. तो जो कार की इंसिडेंस थी उसमें मैं फादर को पहले रखूंगी और फिर दादी और Sure. स्कूल बराबर से. स्कूल इंस्टिल करता, कभी वो बच्चा स्कूल में विल बी वेरी माइंडफुल ऑफ इट, पर घर जाके नहीं होता है. स्कूल में ही इज मॉनिटर्ड, सो ही डज इट और शी डज इट, बट घर जाके नहीं करता. So when we are teaching them, we try to tell them that when you are at home, not only your house, even your surroundings should be taken care of by you. अपने पड़ोस में भी जा करके कभी कभी बातें करा करो और अपनी साफ सफाई के लिए उनको भी बोला करो. तो बच्चों के ऊपर जब ये एक जिम्मेवारी डाली जाती है, उनको ये कहा जाता है कि अच्छा किसी भी दिन कोई भी टीचर आकर के देख भी सकती है, तो दे आर केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज फॉलो अप फॉर एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे ही, सिखाएंगे, तो जरूरी नहीं कि वो बच्चे उसको उतनी सीरियसली करें. तो आई वुड से कि उनको फॉलो अप का अवेयर होना चाहिए कि देखा जाएगा कभी ना कभी किसी चीज में रिफ्लेक्ट. नहीं तो अपने स्कूल में कुछ ऐसा एक क्लब बना ले या हम एक ऐसा सर्कल बना ले जहां सब एक दूसरे के साथ मिलकर के करें और एक दूसरे के ऊपर नजर भी रखें. तो उससे इस चीज का हम we can make sure that the children will learn about hygiene and cleanliness around them. And incidentally, our school is very clean. Children are aware. If they are walking around and if they see something lying down, they pick it up and throw it in the bin, taking care of their own environment. So I would say they have to own it. They have to be taught to own that this surrounding belongs to me, so I have to preserve it. Sure. We have Ms. Vinisha Umashankar with us. She's the Chief Innovation Officer of Solar Ironing Cart, and she has also spoken at the COP26 in Glasgow. Vinisha, welcome to the show. Obviously, you know what discussion we are having here. So what's your take on it? So, life goals. I think it's a really good campaign made by the Indian government for our country. And I would just like to touch on the topic we were discussing earlier, which is the problem of littering amongst the younger generation. Here, I would like to share a certain incident, which is while I was traveling with my classmates in the school bus, one of them threw a snack cover outside of the window. Now, I did ask her about it, and she said, well, if it's going to lie on the ground, then the garbage collectors are going to come and clean it up anyway, so why should I bother? This is some of the mindset that goes around in our generation, and we really do need to raise awareness on how to change that mindset, because that comes from the generations before us who never corrected us for doing that. So with increased exposure and increased awareness, this will all be able to change. And since individual action is one of the core of climate responsibility in the LiFE goals, I think starting with the simplest of problems and solving it from there, the simple things that we preach a lot, but when it comes to practice, I think many of us do fail in that aspect. Simple things like saving electricity, water, reusing water, or saving it. We do preach about it so much, but sometimes when it comes to putting it into practice, many of us do fail at it. So even though these are small things, if many of us, India is a population of almost millions, billions of people, doing it together is like a drop of water falling in the ocean. If we do it together, it can create a huge amount of change. And I think those principles are the core of our life goals. And Totally. I think that's what we need to follow. Totally. Vinisha, you will be with us. I'll like to go to Dr. Jyoti Gupta. Jyoti, now what Vinisha actually means is that सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास EVS जैसे, जिसमें पर्यावरण की बात की जाती है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ होती हैं, बट
ग्राउंड रियलिटी पे आपको लगता है कुछ करना चाहिए? दे शुड बी एन एक्सपेरिमेंटिंग learning that should be given to the kids so that they're more closer to the nature, they understand it better. So experimental learning की यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप किताबों में उन्हें पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं और चाहते हैं कि वो सीख जाएं. Your take? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, and what Vinisha has said, I'm totally in sync with her, and I'm sure my co-panelist will also agree that though the syllabus, the content is already there in the curriculum that we transact with the children. Environment is a huge topic, and we call it as environment studies. From up till class 5 also, they turn into the other STEM subjects up from class 6. But what we have tried to do is, like, our entire holiday homework was on the SDGs, the Sustainable Development Goals, and it was on the G20 leadership and the topics that we are discussing even in the G20 in our own country's presidency. So we gave that experiential learning homework to our children, where they had to research, they had to write down, and they could choose their own expression the way they wanted to. We also go for the plantation drives. The entire first week of July, from the July 1st to 7th, our children were doing the plantation drives. Even we were celebrating the birthday. Did it make any difference? Did it make any difference? Yes. Did you feel that? It does, because we encourage our children to plant the saplings on their birthdays. So instead of celebrating the birthdays, by doing the parties, etc., which they can do at home, but they are encouraged to plant these saplings. They are encouraged to look after them. Similarly, now 50 years of Project Tiger have been completed. So we are doing a full project in our entire school, where all children are being exposed to what were the benefits of Project Tiger, what is the importance of having the tigers, what is the importance of having the forests and the plantations. So the school curriculum, actually, it's all leadership driven. If you as a principal are concerned about the environment, you will create different projects for the children, and they are all interdisciplinary. Now, when they talk about the Project Tiger, they will talk about the environment. They will talk about the importance of trees. They are going to talk about botany, biology. They are going to talk about numbers, that is mathematics. They are going to talk about the social sciences. They are going to talk about the geography. They are going to talk about history. And language and the presentation skills will anyway come in. So we have to be very mindful about what we are doing with the children, and just the what is mentioned in their books is not enough for this. So it's important that all the initiatives that are being taken at the level of the Prime Minister, or where we are participating as a country, that it comes down to the children in the schools, and they understand the importance of all of it. And curriculum is, all about this. It's not just about academics. Academics is just a part of what the children can do. So they can choose different medium of expression. It's not necessary that they will sit down and write in their copies only. They can draw, they can paint, they can do the slogans, they can do the nukkad nataks, they can prepare songs, they can do rap songs, they can dance. So it can be done in a very innovative manner. It can be done in a manner in which the children will always remember. Because this is a life skill. Obviously, we want to make it long-lasting for sure. Yes, it is not just a biology or a botany chapter, or it is not just about chemistry or about geography. It is more your life skill, because it's the way you live. If we do not use water judiciously, we are not going to leave water for the next generations to come. So we have to be very mindful of this. Right. I would like to come to K.E. Jermia. Wanted to ask you a question. आप क्या सोचती हैं, क्योंकि EVS एक सब्जेक्ट रखा जाएगा अगर मैंडेटरी कर भी देते हैं, तो आपको एक एस्पेक्ट ये लगता है कि बच्चे शिकायत करते हैं कि करियर एस्पेक्ट इसमें कुछ नहीं है, क्यों सीखें,
पर्यावरण को देख लेंगे, पहले अपना करियर देखते हैं और इसको पढ़ लेंगे, हम हो जाएगा, आगे भी काम कर लेंगे। कुछ इस तरह का रिएक्शन आप सोच सकती हैं कि एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि लोग बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इसीलिए शायद ज़्यादा एनवायरनमेंट एजुकेशन पे भी ध्यान नहीं दिया जाता? Is this a reason also? See, NEP also stresses on that, and we've had EVS since a very long time. That is one subject which at least compels the students to be aware of their environment. Otherwise, how many of them get interested to know? I mean, the trees that are around in the school, many of them will not know the leaves. They don't identify the leaves to that particular tree. So, as a subject, I would say it's a very good initiative that again they are saying. Only thing is, I say EVS, environment study. We can add EVM, environment management, where you learn how to manage your environment, because it is your home. You living over there and you have to manage. So over here, see, we are a boarding school also, and there was a Mission Butterfly program years back, which introduced vermicomposting and all this solid waste management. And we've been doing it. We followed it then, and we are still doing it. All our kitchen waste goes into those pits. Children know it. Children have been taught to go around and plant trees. Now, very soon, we will be celebrating Harela. Now, Harela is a local festival of Uttarakhand, which indicates tree plantation. Harela ke din, it is very auspicious. So the children also go around in the campus planting trees. They plant around their house also. They're told to keep a check on that also, and to get back to school to tell us how many plants have they planted. Then at the same time, they go and to different schools, primary schools and other such schools, to make them aware of hygiene and sanitation. We have a sanitary napkin unit in the school, and they carry those to the poor children also and make them aware of sanitization. So, I mean, all these things, unless we include the children, syllabus is not enough. Syllabus is for examinations. This is for life. So we want them to lead that kind of life, which affects not only them, but everybody around them also. Family. Indeed. That's what they call life goals also. शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूँगी मैं। तो आप क्लीनिंग ड्राइव करते रहते हैं और सफाई अभियान चलता ही रहता है, तो आपके साथ क्या बच्चे जुड़े होते हैं? क्या आपको दिखता है कि उनमें ये कॉन्शियस है? बच्चे जाते हैं जी, बच्चे जाते हैं। The groups of children go out. We have a lake, तो वो lake cleaning करते हैं. They go out and clean the surroundings also. Yeah, Jermaine, that's what I wanted to understand. We have a green warrior with us who has been, yes, doing this and is associated with this kind of cleaning of River Ganga. शुक्ला जी, आपसे जो मैंने सवाल किया कि आप करते रहते हैं क्लीनिंग ड्राइव, तो बच्चे कितना जुड़ते हैं इस ड्राइव से, और ये क्या डिसिप्लिन मानेंगे आप, या उनकी अपनी कॉन्शियस है कि वो आके खड़े होते हैं? आप रूबरू हुए हैं बच्चों से अपनी क्लीनिंग ड्राइव के समय? बिल्कुल, हमारे जो देश के भविष्य छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हमारी प्राकृतिक संपदा के बारे में ज्ञान और प्राकृतिक संपदा के बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। और इसी निमित्त पिछले 10 वर्षों के दरमियान हम कई स्कूलों में भी जाकर के बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताते आ रहे हैं, जल संरक्षण के बारे में बताते आ रहे हैं, स्वच्छता के बारे में बताते आ रहे हैं। और कई स्कूलों के बच्चों ने हमारे साथ गंगा के किनारे स्वच्छता अभियान भी किया है। बच्चों में यदि इनके स्कूल से ही यदि यह परंपरा डाली जाए, यह शिक्षा दी जाए, यह उनको बताया जाए कि हमें अपनी प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए क्या क्या करना है, उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनको बताया जाए कि ये प्रकृति ही हमारे लिए सब कुछ है,
प्रकृति है तो हम हैं, पर्यावरण हमारा यदि अच्छा है, वातावरण अच्छा है, यदि हम शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं, शुद्ध जल ग्रहण कर सकते हैं, शुद्ध वायु हमें मिल रही है, तो निश्चित रूप से बच्चे जो कि स्कूल के दरमियान एक ऐसे संस्कार ग्रहण करते हैं जो कि यदि शुरुआत में ही उनमें बीज डाल दिए जाएं स्वच्छता के, पर्यावरण संरक्षण के, तो हम पिछले कई वर्षों से स्कूल में जाकर जब यह बच्चों को बातें बताते हैं जी। तो हमें लगता है कि यह कार्य बड़ा ही हमें उपयोगी नजर आता है। और हमने तो कई बच्चों के साथ जब स्वच्छता की तो बच्चे भी बड़े हंसी खुशी इसको लेते हैं, आनंद उनको आता है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव आज हम बना रहे हैं। और यह हमारा अमृत महोत्सव तभी सार्थक होगा जब देश के कर्णधार नौनिहाल जो कि स्कूलों में पढ़ते हैं वह साथ में आए, पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें और उनको हम एक विस्तृत पैमाने पर जागरूक करें कि हमारे बच्चे जो है वो एक ऐसे वातावरण को बनाएं जिससे कि हमारा भारत निरंतर पर्यावरण के क्षेत्र में, और क्योंकि भारत को प्रकृति ने एक अटूट जैव विविधता दी है, एक अटूट संग्रह दिया है प्रकृति का, हम प्रकृति को कैसे सहेज सकते हैं, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। यदि स्कूल से ही प्रारंभिक स्तर पर ही यदि बच्चों को हम यह शिक्षा दें, और जब हम सच मानिए जब बच्चों के बीच में जाते हैं उनको पौधारोपण करने के लिए कहते हैं और उनको जब कहते हैं कि आपका जन्मदिन जब आए आप एक पौधा अवश्य लगाओ बेटा और उसका संरक्षण भी करो, तो बच्चे भी उसको अधिक ध्यान केंद्रित करके यदि उसको खेल खेल में हंसी खुशी बच्चे इस पर्यावरण की सीख को समझेंगे, लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे भारत का जो पर्यावरण है वो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। विनीशा, आई वुड लव टू कम टू यू। Do you think we have to make a conscious effort to teach children that environment is important, what role it has to play in your life, for your future generation also? Is it a discipline that comes into picture, or is it a conscious effort from an individual that comes into a picture? What's your take? I believe it's a combination of both, and I am very much in support of environmental education being taught at schools, but I also think it would be a good idea to integrate it into other subjects as well. Suppose a story in English, or integrating it into all three sciences as an interdisciplinary subject. So those would be really helpful, bringing a sense of nature into the system of education. But also, one can be educated, but you have to take your own effort to implement it by yourself. So that also comes from the effort of an individual. They can choose to do good to the environment or ignore it. But in the current state of the world, I think we should choose the first one, to take care of our environment. This is the world we are going to live in, we are living in. So it makes the most sense that we take knowledge of our environment from a young age and learn to implement it throughout our life. Sure, Vinisha, exactly. I do agree with you and second you on this. Dr. Jyoti, coming to you, I'm sure enough is being done, but do you think there is some more that can be actually done, and how do you plan to implement? Because obviously you are seeing kids around, you are a principal yourself, so what is your take? How should it be implemented in schools, not just by education, but in some other ways also? So, lot has been said by Dr. Jeremiah also and Vinisha also. So the new education policy talks a lot about sensitizing the children towards the environment, towards the community that is around. And a lot of progressive schools are doing enough.
But the need of the hour is that it should be spread across the country, pan India. All schools should take up different projects for the children. Like, I'll give you some examples. We were talking about environment not being a choice of career for the children, but I would say today there are a lot of careers that stem out of the environmental studies or EVS. In fact, the children who are studying environment in the universities, they get absorbed, they get the jobs very, very easily, whether you talk about solar energy or you talk about windmills or you talk alternate sources of energy. They are also a topic of environmental studies. The vermicompost that was being talked about, cleanliness, how to do the waste management. They are all careers of today, and there are a lot of children who are moving towards this as well. So again, I would go with what Manisha was saying, that it has to be an integrated study. That is how we take it up. For us, the environment, EVS or environmental studies is the main, we would say the theme, and the rest of the subjects are taught through this main theme. So we call it transdisciplinary. So we are taking up the main theme of this transdisciplinary EVS, and we are teaching the languages and mathematics through this theme, so that gets an equal importance, and the other subjects are connected through these themes. And like I said, that our holiday homework was totally on the SDGs and on the G20. So that way the children get an idea that this is an important topic. We also teach entrepreneurship and we also teach citizenship. So a lot of topics of citizenship also include how to keep your environment clean, how to keep it green, how to utilize your natural resources judiciously, because they are not in abundance anymore. So children choose their topics and then they take it as their project. Now, waste management, waste segregation, and the entrepreneurship clubs, they come and they combine with the eco clubs and they create wealth as well. Like, I'll tell you an example. Our children, there is a group of children who collect coffee, the used coffee from the different outlets of coffee, where they just throw it as waste. They bring it back because that's like pure nitrogen. They bring it back, they make the beauty products out of it, they pack it as manure and they give it to, the houses that are around our school, and they utilize that. Similarly, all the paper that comes to us, in the form of newspapers, because there's newspaper in education. That entire paper, and also, the certain paper that is utilized and is a waste, that's all used to create the recycled paper. Sure. So our, the covers of our writing pads, our boards that are there, everything is covered by this paper. We do not buy the writing pads paper from outside. So that's also related to the environment. Similarly, the vermicompost pits, whatever biodegradable waste is there, that all goes into the vermicompost pits. It's not just we utilizing it, we also give it to our neighborhood. So we collect their biodegradable and we give the manure back to them, and we collect the little money from them. That little money is only 50 rupees a month or something like that. So the children are doing these and they are finding value in it. Now, the very incident that our Prime Minister went to the US and he gave the, lab-grown diamond to the First Lady of the US was also a matter of discussion. Why? Sure. Because again, the carbon fields the mines are also receding. So that was an example. So all these things, they come as a part of our curriculum, and we try to, make sure that the children are aware of it. They are talking about it. They are researching about it. They are presenting. They are writing papers. They are publishing those papers and articles in the school magazine, even outside, the school environment. So we are getting there. But again, the question is that are all the schools doing it? Is it a mandate? That's what. It's not a That's mandate. what. That's what I want. It's not a mandate. Exactly, Jyoti. That's what I wanted to speak to Shukla ji on this. Shukla ji, आपसे जानना चाहेंगे कि
बेसिक नॉलेज जो है पर्यावरण को बचाने की, पर्यावरण की तरफ हर एक इंडिविजुअल की क्या जिम्मेदारी हो, क्या आपने नोटिस किया है और आपको क्या जानकारी है इस बारे में कि ये हर बच्चे को सिखाया जाता है स्कूल में या नहीं सिखाया जाता है? और क्या जब ये सिखाया जाता है तो ये क्या प्रीमाइसेस तक ही रह जाता है या लॉन्गर रन में भी वो एक्चुअली इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने एक्शंस को? इस संदर्भ में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों को प्रॉपरली पर्यावरण के बारे में शुरुआत में ही बताया जाता है, यह अप्रिशिएबल भी है, लेकिन अभी भी इसकी थोड़ी सी स्थिति कमजोर है। हमें निश्चित रूप से बच्चों के दिमाग में, उनके पाठ्यक्रम में, या कह लीजिए एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा कि बच्चे स्कूल में भी पर्यावरण के संदर्भ में समझें, जागरूक हों और इस दिशा में खुद भी स्वयं प्रयास करें। वो स्वयं प्रयास करेंगे और जब उनके माध्यम से हमारे देश के जो लोग हैं, नागरिक गण हैं, वो जागरूक होंगे और उनके प्रयास से जब घर के माता पिता, बच्चे के आस पड़ोस में रहने वाले नागरिक, बच्चे यदि किसी बात को ठान लेते हैं तो निश्चित रूप से वह समाज में ज्यादा रूपांतरित भी होती है। यदि शिक्षा के दौरान ही बच्चे इस बात का प्रयास करेंगे और सबको बताएंगे भी, जो उन्होंने कार्य किया है पर्यावरण के संदर्भ में वो करें, और समाज के सामने भी, सामाजिक रूप से भी, जहां वो रहते हैं, जहां वो जिस शहर में रहते हैं, या कोई गंगा के किनारे रहता है, कोई नदियों के किनारे रहता है, जहां पे हमारी माता की तरह हितकारी नदियों के संरक्षण की बात हो, जहां पर हमारे पेड़ पौधों के संरक्षण की बात हो, यदि बच्चों के माध्यम से यह प्रयास किया जाए, जिसमें कि अभी थोड़ी सी कमी है, यदि इस कमी को हम सुधारें और इसको स्कूल के माध्यम से एक सुखद संयोजन करें, इसमें कोई बच्चों के ऊपर बाउंडेशन ना कर दे, उनको एक हंसी खुशी समझाएं, उनको प्रेम से समझाएं। जब छोटे से बच्चे इस बात को जानेंगे अपने पर्यावरण के विषय में, उनको जब जानकारी होगी कि हमें अगर पौधे लगाना है, उसका संरक्षण करना है, स्वास्थ्य तभी ठीक होगा जब गंदगी है तो बीमारी है, और स्वास्थ्य जब सही रहेगा जब हम स्वच्छता रखेंगे। इस बात की जिम्मेदारी स्वयं बोध करते हुए बच्चों को हम बताएं, उनको समझाएं, और उनके माध्यम से कहीं भी यदि कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारा जो पर्यावरण है वो खुद ब खुद हम संरक्षित करते जाएंगे। और निश्चित रूप से बच्चों को स्कूल में और घर पर भी अपने माता पिता के माध्यम से और अन्य उनके जो सहयोगी हैं, उनके घर में जो रिश्तेदार हैं, उनके माध्यम से भी यह सीखने की अत्यंत आवश्यकता है। हम सबको समझने की आवश्यकता है कि हम बच्चों के माध्यम से एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल। विदिशा, कमिंग टू यू, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? Well, yes, definitely. Environmental education should be mandatory. In fact, I do think it used to be mandatory until grade 5, which is primary school. And I still think it is, but as you go into middle and high school, which is grades 6 through 12, it reduces and focuses emphasized on other subjects, which is understandable. But with the talk of the hour being climate change and several other world issues, real world problems, environmental education could be given a set of time, even for the higher grades, because the more awareness we gain at an earlier age, the more likely we are to carry these habits for the rest of our lives. So with that exposure through education and learning through the internet as well, the internet has been a great place for exposure about environmental problems, and through the media we also gain a lot more information on how we can help. Many volunteering experiences, competitions for new innovations, and opportunities to speak out and voice your opinions are becoming more and more prevalent across India as well. So through all of this, I think we can finally make a change. Exactly. Coming to you, Mrs. K. Jerma, you are principal of college and you've been dealing with the slightly senior
not kids, but of course senior students that you would be interacting on everyday basis. Yes. What has been your observation about them when we talk about environment, we talk about saving the environment, that the generation that they are, and for the generations to come, it's their responsibility to actually hand over a healthy environment to the coming generation. What's your take? What's the experience that you have gotten from them, and what is it that you have absorbed till now? Thank you. My seniors are really mighty warriors. Mighty warriors, I would say. What makes you say that? Because I've seen them where they cannot see me, like I've seen them going out and doing such wonderful work connected to these goals, life mission goals, that I feel very happy helping somebody outside, with a very little small gestures. So, and cleanliness, as I said, is ingrained in them. They are so conscious that they will make sure that anybody who's around them is also aware that they should not be littering the ground, that they should be careful about plants, that they should be careful about their other environmental things. They are very conscious. And what I say is, when we are implementing this, and this is undoubtedly a very good suggestion that has come in this statement, it's not debatable at all what our Honorable Prime Minister has started, making #life goals mandatory in schools. It should be. But see, the way we do it lies with us. And one thing we should remember, children do everything which makes them happy, which makes them feel proud. No belittling anybody and no forcing anybody. By example of others, try and do it. I'll just quote something which I came across. Sure. Because it's not difficult. I came across this thing, inspirational talk. So I came across this and I was quite impressed. It says, न्यूनतम से शुरू करो, न्यूनतम से शुरू करो और सरलतम का अभ्यास करो. See how easy it is. हम उनको छोटा सा कुछ चीज दें. फॉर एग्जाम्पल, क्लीनलीनेस के लिए अपनी क्लास में अपना डेस्क दिन शुरू होने से पहले अपना डेस्क साफ कर लो. पूरी क्लास साफ रहेगी. आप जहां बैठे हुए हो वहां आसपास देख लो, अगर कुछ पड़ा हुआ है तो उसको उठा लो. पूरी क्लास में तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम अगर इन बच्चों को सिखाएं और कॉन्शियस करें कि हाउ गुड यू फील, they have to feel good about it. They have to feel good about planting a tree. They have to feel good about taking care of that tree. That ownership जो होती है, ये मेरा पौधा है, अब मुझे देखना है कि ये बढ़ता है कि नहीं. At the same time, घरों में I'm very particular about one thing. I tell them, आपकी दादी या आपकी नानी को हो सकता है इंग्लिश नहीं आए, तो उसका क्या मतलब है ना? आप इस चीज को ध्यान में रखिए और उनको उतना ही आदर मिलना चाहिए जितना उनका हक है. So all these things comprise of life goals in making into a girl a worthy citizen and an able woman of India who will be taking care of everything around her. Woman power is really something to reckon with. So Dr. Jyoti, would you like to add on to this, please? So, like everybody has said, it's important to have, I would go a little step further, have citizenship as a subject, where, you have cleanliness, you have environment, you have your responsibility, where you have your role, everything is embedded into it.
And it's important to consciously teach. Like, for example, what Manisha was saying, that it is only mandatory to study, the environmental studies, as we call it, EVS, up till class 5. After that, though we have chemistry, biology, and physics, we do not relate it to the real life problems. We are just having in our curriculum the principles of science. So it is important for you to solve the equations. It is important for you to know about atom. It is important for you to know about, the structure or electronics. But nobody is talking about the e-waste there. Nobody is talking about what do you do with the electronics once you do not want to use them, how to dispose them off. Exactly. So the real life problems that are taken, and if the children start providing these solutions to these real life problems, only then the innovation will come in. Only then creativity will come in. And when I Obviously, say they're the creativity, fresh mind, and they would yes. understand So it better. when They I would talk have a better about solution for it, no creativity, doubt. yeah, it is creating new knowledge. You've already learned the principles of science, but how do you apply those principles to save your environment? You've already learned about energy, but what are the different sources of energy? How can you produce the electricity? Is it only being produced by the traditional methods, or are there new methods also? What are the new real life problems to which the solutions are going to be provided? If you do not give that trigger to the children, and if you do not allow them to innovate, to think about what solutions can they bring to the table, then it's pointless educating them. So that's what the new National Education Policy 2020 aims at. What kind of people are we going to have in future? What kind of workforce are we going to have in future? Now, how to train them in the schools? How should they be more aware of their environment? How should they be more empathetic towards the people? How should they be job creators and not the job seekers? So all this is laid down there. The NCF is going to be published very soon. I think on 29th of July, we will see the NCF also. And then how do the schools take up this national curriculum framework, which is going to be published? And how do they create the environment in their school for that child to learn? Because teaching is not important today. It is how the children are going to learn, because there is so much. Manisha was right now talking about the internet and the power of internet. We have the chat GPTs, we have AI around us. So the environment that has to be created for that child to learn and provide solutions to the real life problems, and the focus on outcome based education is important. So that is what is competency-based education. So that is what the NEP is propagating. That is what is the outcome of what you are learning in the classroom. Exactly, That's all. outcome. Yeah, outcome is the final thing, of course. And on that note, thank you all of you for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट पे। और निष्कर्ष यही कि ये एक कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए हर इंडिविजुअल की तरफ से, आपसे, हमसे, सभी से। वी शो कैन लर्न, बट वी नीड टू एग्जीक्यूट आवर लर्निंग्स. इट शुड शो इन आवर एक्शंस. पर्यावरण हरा भरा रहेगा तो जाहिर सी बात है हम भी खुशहाल रहेंगे. ऑन दैट नोट हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नई डिबेट के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त.